Hello viewers, the question is explain what would happen if in the capacitor in exercise 2.8 a 3 thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. Part A, while the voltage supply remained connected. Part B, after the supply was disconnected. So in this problem there is a reference to the previous problem, and here a mica sheet is inserted, and the thickness of the mica sheet is 3 which is exactly same as the distance between the plates of the previous question. So first of all, we have to calculate the new capacitance and the new charge. So for part A, we have to calculate the new capacitance. So the new capacitance C dash is equal to K times C, where K is the dielectric constant, which is given as 6. And the earlier capacitance, which we have calculated in the previous problem, is 1.771 into 10 raised to the power minus 11 farad. So after solving this value comes out to be nearly 106 picofarad. So this is the new capacitance. Now the new charge, suppose it is Q dash, it is equal to the new capacitance multiplied by the voltage, which is equal to 106 multiplied by 100, because the voltage given in the previous problem was 100 volts. So this comes out to be, this value comes out to be, the new charge comes out to be 1.06 into 10 raised to the power minus 8 coulombs. 10 raised to the power minus 8 coulombs. So this is these are the values of capacitance and the charge respectively in the first part. Now in the second part, we have to find out the value of the capacitance as well as charge as well as voltage when the situation is this, that the insertion of the mica sheet is after the supply was disconnected. Now we know that from the previous problem that when there is no insertion of the mica sheet and we have applied a voltage of 100 volt across it, then in that case we have calculated the charge. The charge in that case, suppose it is Q, so the value of charge is equal to Q equals to CV, and C in the previous part we have calculated as the value of C was, for the previous problem it was 17.71 picofarad and the voltage was 100 volt. So the charge is 1.771 into 10 raised to the power minus 9 coulombs. This thing we have calculated in the previous problem. So this is the charge. So when this supply was disconnected, and after disconnection there is insertion of mica sheet. So when the supply was disconnected, the charge remains same. The charge Q remains same. It will be 1.771 into 10 to the power minus 9 coulomb. The charge will not change. So for the B part, we can say that the charge is 1.771 into 10 to the power minus 9 coulomb. This is the value of charge. And voltage we can calculate as, the voltage is V equals to Q upon C. V equals to Q upon C. Now Q we have calculated as in the previous part, 1.771 into 10 to the power minus 9, and C here is the value of capacitance, the new capacitance when there is an insertion of mica sheet between the plates. So we have to put this value here. So C dash is 106 picofarad. So we can say that 1.771 into 10 to the power minus 9 upon 106 into 10 to the power minus 12. After solving this, we can find out the value of the voltage. So the value of voltage comes out to be, this value comes out to be
16.7 volts. This value is 16.7 volts. So this is the voltage in the B part. So charge is equal to 1.771 into 10 to the power minus 9 coulomb, which is the same as the charge in the previous example, and the voltage is equal to 16.7 volts. So this is the answer of the B part of the problem. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रेफर कर रहा है पिछले एग्जाम्पल को. इसमें कहा गया है कि डाइलेक्ट्रिक जो है इंसर्ट किया गया 3 mm थिकनेस का माइका शीट इंसर्ट की गई है प्लेट्स के बीच में, और इसमें दो कंडीशन दी हैं. पहली कंडीशन में कहा गया है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल जैसे पिछले केस में हमने बात की थी, कैपेसिटर की बात की थी, और कैपेसिटर के अक्रॉस हमने 100 वोल्ट अप्लाई किया था. कैपेसिटेंस भी हमने कैलकुलेट की थी पिछले क्वेश्चन में 17.71 पिकोफैरड, प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमने कैलकुलेट की थी. तो इसमें कहना ये है कि वोल्टेज सप्लाई के लगे लगे में ही जो है उसको बिना हटाए ही माइका शीट को इंसर्ट किया गया है. तो ये पहले पार्ट में चीज़ पूछी गई है. तो यहाँ पे जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो होगी के टाइम्स द प्रीवियस कैपेसिटेंस, जबकि एयर इन बिटवीन द प्लेट्स थी. तो इस तरह से हमने सी डैश निकाल लिया 1.771 इंटू 10 पावर माइनस 11, जो कि पिछले केस में पिछले एग्जाम्पल में हम निकाल चुके थे. सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फॉर्मूला लगा के उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो इस तरह से हमें पता लग जाएगी न्यू कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद. अगर चार्ज की बात की जाए इस कंडीशन में, जो चार्ज हो जाएगा द न्यू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज. वोल्टेज यहाँ पे दी गई है 100 वोल्ट, और न्यू कैपेसिटेंस हम निकाल ही चुके हैं 106 पिकोफैरड. ये वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आता है 1.06 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम. तो ये पहले पार्ट के आंसर्स हो जाएंगे. दूसरे पार्ट में कहा गया है कि माइका शीट को इंसर्ट किया गया है आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड. इसका मतलब ये है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि कैपेसिटर है, एयर इन बिटवीन द प्लेट्स है, कैपेसिटेंस हम निकाल ही चुके थे, 17.71 पिकोफैरड वैल्यू निकल के आई थी. अब यहाँ पे कहा गया है कि बैटरी को पहले हटाया गया, बैटरी को पहले हटाया गया, बैटरी को हटाने के बाद माइका शीट जो है इसके बीच में प्लेट्स के बीच में इंसर्ट की गई. तो ये सिचुएशन कही गई है. तो इस सिचुएशन में ये होगा कि जिस समय माइका शीट नहीं इंसर्ट की गई, यानी कि सिचुएशन पिछले वाले एग्जाम्पल वाली थी कि यहाँ पे बैटरी इस तरह से लगी हुई है, तो जो चार्ज हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, चार्ज निकल के आया था CV. CV यहाँ पे C हम लेंगे जब एयर इन बिटवीन द प्लेट्स है, जो कि वैल्यू हमारी निकली थी 17.71 पिकोफैरड, और वोल्टेज है हमारा 100 वोल्ट जो हमने अप्लाई किया है. तो यहाँ पे चार्ज जो है वो निकल के आता है हमारा 1.771 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम्स के बराबर. अब कहा गया कि बैटरी को हटाया गया पहले, यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं वो ये है कि पहले बैटरी को हटाया गया, हटाने के प्रोसेस में चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज वही रहेगा 1.771 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम का ही चार्ज रहेगा. इसके बाद कहा गया कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है माइका शीट इंसर्ट की गई है. तो माइका शीट इंसर्ट करने के प्रोसेस में क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी. सी डैश जो है वो जो नया कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा, जो अभी अभी हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया है 106 पिकोफैरड का कैपेसिटेंस हो जाएगा. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से कि चार्ज तो उसने पिछले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से होल्ड रखा, जैसे 1.771 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम, और कैपेसिटेंस अब चेंज होकर 106 पिकोफैरड हो चुकी है. तो अब अगर हमें वोल्टेज निकालना हो इस सिचुएशन में, तो वोल्टेज बराबर होगी चार्ज विच इज 1.771 into 10 power minus 9 कूलम अपॉन द न्यू कैपेसिटेंस विच इज 106 पिकोफैरड. अब इस पिकोफैरड वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे फैरड में, तो 106 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरड. तो इस तरह से इस रेशियो को निकाल के इसको सॉल्व करके जो वोल्टेज की वैल्यू आती है इस कंडीशन में बी पार्ट में, वो आती है 16.7 वोल्ट्स. तो ये आंसर होगा आपका बी पार्ट का. सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.